अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने टॉपिक में डिस्कस किया था लॉज ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन्स ने वो जो 3 लॉज दिए थे, किस किताब में दिए थे, क्यों दिए थे, हम ये लॉज हमें क्या सिखाते हैं, तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। आज हम पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। इट स्टेट्स दैट if the net force, that means the sum of all forces acting on an object is zero, then the velocity of the object is constant. It stated that if the net force means all the forces acting on the body, सारी force, अगर कहाँ फोर्स बॉडी अप्लाई करो तिमन सारे फोर्सन नेट फोर्स इज जीरो, तुहद वैल्यू कहें। अमु मतलब गो अगर बॉडी पे कहें ति फोर्स अप्लाई करो, चाहे फोर्स ऑफ ग्रेविटी चाहे बदल कह फोर्स, कहें ति फोर्स गई अप्लाई बॉडी पे, then the velocity of the object is constant. गो अकिस ऑब्जेक्ट सं वेलोसिटी, वेलोसिटी लफ्ज, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, that means at मजी स्पीड at मजी डायरेक्शन, शाबाश, यम दोनवे रोजन कांस्टेंट। गो यम गसन न चेंज की। गो अगर अख बॉडी यह मोशन मज, अगर न बह अमिस पे कहें ति फोर्स अप्लाई कर, अम सज वेलोसिटी मज यह कहें ति फर्क। फॉर एग्जांपल अगर कह बॉडी अम सज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, पकान वनकस 5 मीटर पर सेकंड, अगर न बह अमिस पे कहें ति फोर्स अप्लाई कर, दैट मीन्स यह रोज हमेशा यूनिफॉर्म मोशन मज, अम सज वेलोसिटी न गई इंक्रीज न गई डिक्रीज। या अगर यह बॉडी ईस्टस कुन पकान, अगर न बह अमिस पे कहें ति फोर्स अप्लाई कर, यह रोज हमेशा ईस्टस कुन पकान। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। It states that if the net force, if we do not apply any kind of force on a moving object, then its velocity remains constant. That means its speed and its direction remains constant. ना गस इन स्पीड में इंक्रीज ना गस डिक्रीज, यपर यह पाकन यह रोज हमेशा पाकनी तुकनी। समझ आवा? गो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वन, अगर बह बॉडी पे कहें ति फोर्स अप्लाई कर, गो अम सज वेलोसिटी पे पे कहें ति फर्क। दैट मीन अम स्पीड पे, दैट मीन अगर यह 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, गो अम सज वेलोसिटी हमेशा 5 मीटर पर सेकंड, अगर अम पे फोर्स बह कहें ति अप्लाई कर। अगर ईस्टस कुन पकान या वेस्टस कुन पकान, गो अगर अम कहें ति फोर्स अप्लाई कर, यह रोज हमेशा ईस्टस कुन या वेस्टस कुन पकान। ठीक, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए आप, अगर हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखेंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो है if F is equal to 0, that means when we do not apply any kind of force on an object, its velocity, that means dv by dt is equal to 0. अम सज वेलोसिटी पे पे कहें ति फर्क, that means अम सज वेलोसिटी तो हमेशा कांस्टेंट। गो अम सज तेरे ज चीज फिक्र अम स्टेटमेंट से बलिया तिम लिखें, एन ऑब्जेक्ट, अगर कह ऑब्जेक्ट दैट इज at rest, remains
यह रोज हमेश will remains at rest. It was हमेश रेस्टस मज unless force acts upon it. गो अम कंडीशन फिक्री अगर कह बॉडी रेस्टस मज सह रोज हमेश रेस्टस मज तीतिस कालस ना बह अमिस पे फोर्स अप्लाई कर गो अगर न कहीं फोर्स अप्लाई कर यह रोज हमेश रेस्टस मज अगर वह बह अप्लाई कर गो यह हेक रेस्टस मज शाबाश मोशन मज रेस्ट पे मगर ये बह फोर्स अप्लाई करस अगर न फोर्स अप्लाई कर यह रोज हमेश रेस्टस मज सू लिख मे अगर कह बॉडी रेस्टस मज सह रोज हमेश रेस्टस मज यीतिस कालस अप्लाई कर गो अगर न कहीं फोर्स इन अप्लाई कर रोज हमेश रेस्टस मज गो ये स्टेट अम सू तर जी फिक्री दोम an object that is in motion yusum pakun will not change its velocity unless a force acts upon it. That means अगर कह बॉडी पकान मोशन मज पन पोजिशन कर चेंज रेस्पेक्ट टू टाइम अम सज वेलोसिटी दैट मीन्स अम सज स्पीड रोज कांस्टेंट बे यम डायरेक्शन मज पकान सह रोज कांस्टेंट ये मैं गॉडनेस समझो तुम गो अगर कह बॉडी रेस्टस मज सह रोज हमेशा रेस्टस मज यीतिस काल पे फोर्स अप्लाई कर अगर अमिस पे कहीं फोर्स अप्लाई कर दैट मीन्स अ बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट अगर कह बॉडी मोशन मज अम सद वेलोसिटी पे पे कहीं फर्क दैट मीन्स ये स्पीड सान सह पकान सह रोज तमी हिसाब पकान ये डायरेक्शन सह पकान सह हमेशा तमी डायरेक्शन किन पकान दैट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वन अगर कह बॉडी मोशन मज सह रोज हमेशा मोशन मज अगर कह बॉडी रेस्टस मज सह रोज हमेशा रेस्ट मज इफ द नेट रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज जीरो अगर पे कहीं फोर्स अप्लाई कर तो बूझमुत अत न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वन ब्या नाव लॉ ऑफ इनर्शिया यह समझो अत क्या वन लॉ ऑफ इनर्शिया थी सा नजर अत ब्या नाव वन लॉ ऑफ इनर्शिया अगर भी वर्ड इनर्शिया निवन यह लैटिन वर्ड मज दिस इनर्शिया वर्ड इज derived from a Latin word that is inerts INERS inerts inerts माने गो laziness idle sluggish वसैरो इस inertia लफ्ज़ Latin word inerts मज inerts माने गो laziness माने गो फॉर एग्जांपल अगर अमिस कहीं कर पन्ने हिसाब पकान फॉर एग्जांपल तय वन बह कह ऑब्जेक्ट या कंस इंसान दप तक कम कर यह पन्ने मज कर मगर मे जल्दी करना गो इस काल बे हो क्रैक दिम या दक दिमस चीर दिमस कर जल्दी कम तेली कर मतलब गो यह बेकार इन द सेंस मतलब गो अगर न अमिस बॉडी पे कहीं करो गो यह बॉडी रोज हमेशा तथ पोजिशन मज ये मज अगर यह शोंगित दैट भी रोज हमेशा शोंगत यीतिस काल न यूज नाव ठीक उस काल फोर्स अप्लाई कर गो इनर्स माने गो आइडल बेकार स्लगिश लेजी ठीक यह टर्म यह टर्म इनर्शिया दिसमस जोहान्स केपलर असली Johannes Kepler. The term inertia is given by Johannes Kepler, and the term inertia is derived from Latin word iners, means idle, sluggish, lazy. ठीक? Lazy क्या है क्या नाम बोन? बिल्कुल एमी definition inertia is the resistance of an object to change its velocity. Inertia is the resistance. Resistance is the oppositional force of an object to change velocity. अमिक मतलब गो यह property सो force अकिस objectus मज आसन
युस ये ऑब्जेक्ट यथ पोजिशन मन हमेशा यसान कि बह गोस अथ पोजिशन में रोजन दैट वेरी पावर दैट वेरी प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया वुसा अत क्या गो मैच इनर्शिया तिकाज न्यूटन ते वोन अगर अख बॉडी रेस्टस मज या मोशन मज हमेशा मोशन मज सह फोर्स इस मोशन मज रेस्टस मज योत थवान इस वन होल्ड योर हरकत कर that very property, that very resistance is no inertia. That's why it's another name is called law of inertia. वो inertia गई, so resistance, so मुकाबला, so force, एक body हों, so property, एक body हों, यथ मज अख body चीसन, अगर बह रेस्टस मंचस, because हमें रेस्टस मंजी रोज़ी, अगर बह body motion मंचस, because हमें रोज़ी motion मंजी, को न्यूटन ते वंती, अगर आज अख body रेस्टस मंज, रोज़ी हमें रेस्टस मंजी. ये रेस्टस मज रोजन प्रॉपर्टी अ बॉडी हज दैट वेरी प्रॉपर्टी इज इनर्शिया अ बॉडी रोज मोशन हमेशा मोशन मज तथ प्रॉपर्टी सह प्रॉपर्टी यह बॉडी हमेशा मोशन मज दैट वेरी प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया अमी पे ब्याक नाम शाबाश लॉ ऑफ इनर्शिया दैट मीन इट इज द रेजिस्टेंस यह यसान कि बह कर पन मोशन चेंज बह कर पन वेलोसिटी चेंज बह कर पन डायरेक्शन चेंज यह यसान यह दैट वेरी पावर दैट वेरी रेजिस्टेंस इज नोन एज इनर्शिया मगर अगर मैं बह एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करस दैट मीन्स ये बॉडी अगर रेस्टस मज शाबाश यह शाबाश मोशन मज अगर कह बॉडी मोशन मज शाबाश रेस्टस मज या अम सज वेलोसिटी हे इनक्रीज या डिक्रीज गसित अम सज डायरेक्शन ते ईस्ट पे वेस्टस कुन गसित वेस्टस पे नॉर्थ कुन गसित येल बह इंफ्रा फोर्स अप्लाई कर that was about law of inertia and first law of motion. Inshallah tomorrow I will discuss about the important topic about Newton's second law of motion. Thanks for today.